आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। मुलुंड की खबर है अगली, जहां पर पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से फ्लाइट के जरिए मुंबई आता था और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाता था। गिरफ्तार शातिर चोर की पहचान राजेश राजभर के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 32 साल के आसपास है। दरअसल कथित आरोपी राजेश ने मुलुंड के मैराथन एमिनेंस नाम की इमारत में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसकी एफआईआर मुलुंड पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी। वहीं शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी को थाने से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद राज्य से किराए के फ्लैट में छिपकर रहता था और मौका देकर फ्लाइट से भाग जाया करता था। लेकिन इस बार वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। इससे पहले कि वो भाग पाता, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने 15 दिनों के भीतर 5 चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम दिया था। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो चोरी के कारणों का उसने जो खुलासा किया वो बेहद हैरान करने वाला है। आरोपी राजभर ने पूछताछ में पुलिस को बताया है कि वो अपनी शादी के लिए पैसे और गहने इकट्ठा कर रहा था, जिसके लिए चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। इसके खिलाफ डोंबिवली, विष्णुनगर, वसई, विट्ठलवाड़ी, मानपाड़ा और पेन में 6 चोरी और सेंधमारी के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो बीते 15 दिन में आरोपी ने नेहरू नगर, मुलुंड, भांडुप और उल्वे में 5 वारदातों को अंजाम दिया है, जिसमें 14 लाख रुपए का 28 तोला सोना, 1.5 लाख की 2 किलो चांदी बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। दिनांक 17 मार्च रोजी मुलुंड पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये मॅरेथॉन एमिनन्स या इमारतीमध्ये जे आहे की घरफोडी झाली होती. एक फिर्यादी ज्याची आपण फिर्याद घेतली आणि त्याचे शेजारी अशा दोघांच्या घरी जी घरफोडी झाली होती. जवळपास 7 लाख रुपयाचे दागिने, सोने चांदीचे दागिने चोरी झाले होते. त्या अनुषंगानं मुलुंड पोलीस स्टेशनने ते गुन्हा दाखल करून तपास चालू केलेला होता. या अनुषंगानं जे आहे ACP मुलुंड, सिनियर PI मुलुंड यांच्या मार्गदर्शनाखाली जे आहे की त्यांचे जे गुन्हे पथक यांनी तपास चालू केलेला होता आणि तपासादरम्यान जे आहे की आम्हाला जे तांत्रिक पुरावे आणि त्याचबरोबर ग्राउंड लेवलला जे आम्हाला जे इन्फॉर्मेशन होती, या अनुषंगानं तपास पथकानं यातील आरोपी निष्पन्न केलेला आहे. आणि तपासादरम्यान जो आहे की आम्ही आरोपी दिनांक 30 रोजी आरोपीला कळवा पूर्व ठाणे इथून जे आहे ताब्यात घेतलेला आहे. आरोपीला ताब्यात घेऊन तपास करताना असं निष्पन्न झालेलं आहे की मागच्या 15 दिवसामध्ये आरोपी हा मूळचा UPमधला आणि UPमधून तो विमानाने आलेला होता आणि इथं मागच्या 15 दिवसामध्ये त्यांनी 5 गुन्हे केलेले आहेत घरफोडीचे. आणि 15 तारखेला नेहरू नगर, 17 तारखेला मुलुंडचा हा गुन्हा, 20 तारखेला भांडूप पोलीस ठाणे येथे आणि 26 आणि 27 तारखेला उल्वे पोलीस ठाणे नवी मुंबई या ठिकाणी त्यांनी सलग घरफोडीचे गुन्हे केलेले आहेत. या तपासादरम्यान जे आहे साधारण 14 लाख किमतीचं 28 तोळे सोनं आणि त्याचबरोबर साधारण 1.5 लाख किमतीचे 2 किलो चांदी टीमनी तपासादरम्यान रिकवर केलेली आहे. आरोपी हा मूळचा UPचा आहे. राजेश अरविंद राजभर हा मूळचा गजरी, लालगंज, आजमगड UPला आहे. आणि आरोपी तपासादरम्यान जे आहे आरोपीचा पूर्व इतिहास पण पाहिला तर त्याच्यामध्ये 2014 ते 24 या दरम्यानच्या काळामध्ये पण विविध 6 पोलीस स्टेशन, डोंबिवली, विष्णुनगर, वसई पोलीस ठाणे, विठ्ठलवाडी पोलीस ठाणे, मानवाडा आणि पेन पोलीस ठाणे या सर्व पोलीस स्टेशनमध्ये घरफोडी आणि चोरीचे 6 गुन्हे दाखल आहेत.